Ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where 8 documents will be exchanged and the 2 Prime Ministers will also dedicate 2 transmission lines to India-Nepal friendship. I will now announce the first 2 MOUs. The first MOU is on modalities for utilization of India's housing grant component to support reconstruction of 50,000 houses. The second MOU is on implementation of the grant component of India's post-earthquake reconstruction package in the education section in Nepal. And these 2 MOUs will be exchanged on the Nepalese side by Mr. Shantaraj Supeti, Secretary, Ministry of Finance, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary. Excellencies, I will now announce MOU number 3 and MOU number 4. MOU number 3 is on implementation of the grant component of India's post-earthquake reconstruction package in the cultural heritage sector in Nepal. And the 4th MOU is on implementation of the grant component of India's post-earthquake reconstruction package in the health sector in Nepal. This will be exchanged on the Nepalese side by Secretary, Ministry of Finance, Mr. Shantaraj Supeti, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary. The 5th MOU is on drug demand reduction and prevention of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and precursor chemicals and related matters. This will be exchanged on the Nepalese side by Mr. Lokdarshan Regmi, Secretary, Ministry of Home Affairs, and on the Indian side by Shri Hasmukh Adhia, Revenue Secretary. The 6th MOU for implementation arrangement on cost sharing, schedules and safeguard issues for construction of Mechi Bridge under ADB's Sasek Road Connectivity Program, Tranche 2, funded by India, will be exchanged on the Nepalese side by Mr. Devendra Karki, Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport, and on the Indian side by Shri Yudhvir Singh Malik, Secretary, Ministry of Road, Transport and Highways. The 7th document is an agreement on cooperation in the field of standardization and conformity assessment to be exchanged by Mr. Bishwo Babu Pudasaini, DG Nepal Bureau of Standards and Metrology, and by Shri Sanjay Singh, DG Bureau of Indian Standards. The 8th document is an MOU between the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Chartered Accountants of Nepal to be exchanged by Mr. Prakash J. Thapa, President, Institute of Chartered Accountants of Nepal, and by Shri Nilesh S. Vikamase, President, the Institute of Chartered Accountants of India. Excellencies, I now request the Right Honourable Mr. Sher Bahadur Deuba, Prime Minister of Nepal, and Prime Minister Narendra Modi ji to step forward to dedicate to India-Nepal friendship the 232 kV power transmission lines between Kataya to Kushaha and the second one from Daksol to Parwanipur in Nepal. We will now see some live images from the 2 power plants in India and Nepal.
Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request my colleague, the spokesperson of MEA, Shri Ravish Kumar, to moderate the proceedings from here on. Thank you. May I first request the Prime Minister of India to deliver his statement to the media. His Excellency, Right Honorable Prime Minister शेर बहादुर देवबा, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के साथियों, भारत को छिमेकी मित्र राष्ट्र नेपाल को प्रधानमंत्री राइट ऑनरेबल शेर बहादुर देवबा जी र अन्य नेपाली अतिथिगण तपाईहरुका भारतमा हार्दिक स्वागत गर्दा मलाई घेरै खुशी लागत छ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत में प्रधानमंत्री देवबा जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। एक्सेलेंसी, आपकी ये यात्रा एक ऐसे ऐतिहासिक समय पर हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हालांकि हमारे संबंध हिमालय जितने पुराने हैं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों की नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दूसरे की समृद्धि और सुख में दोनों देशों की ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हम एक दूसरे की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव भी करते हैं। एक करीबी पड़ोसी और मित्र देश की तरह भारत नेपाल में शांति, स्थायित्व और उसकी आर्थिक समृद्धि के प्रति हमेशा सजग रहता है। भारत को नेपाल के विकास और आर्थिक प्रगति के प्रयासों में साझेदारी होने का सौभाग्य प्राप्त है। एक्सेलेंसी, लोकतंत्र से आई उन्नति, शांति की स्थापना और सर्वांगीण विकास के लिए नेपाल के नागरिकों की उपलब्धियों की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। मैं नेपाल सरकार को बधाई देता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनावों को 2 चरणों में सफलतापूर्वक कराया गया। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपने जिस तरह व्यक्तिगत तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कुशल और अनुभवी नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों में और सभी वर्गों से बात करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए नेपाल अपने सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को समाहित करते हुए संविधान को सफलता के साथ लागू कर सकेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री देवबा और मैंने दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं पर बहुत विस्तार से और बहुत सकारात्मक बातचीत की है। हमने विभिन्न स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते और नए अवसरों पर विशेष तौर से ध्यान दिया है। हमें खुशी है कि नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं जैसे हुलाकी रोड्स, ट्रांस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर काम हो रहा है। आज हमने संयुक्त रूप से कटैया, कुशवाहा और रक्सौल परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइंस का उद्घाटन किया। इससे भारत द्वारा नेपाल को दी जा रही
लगभग 350 मेगावाट बिजली में 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली और जुड़ जाएगी। हम अपनी आर्थिक साझेदारी के विभिन्न आयामों जैसे ऊर्जा, जल संसाधन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन के कार्यों में साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देवबा और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि पहले से चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए अपने प्रयास हम और बढ़ाएंगे। अब मुझे खुशी है कि जब देवबा जी ने मुझे बताया कि अरुण 3 के लिए नेपाल में भूमि का मामला सुलझा लिया गया है, मैं देवबा जी का धन्यवाद करता हूं कि उसके शिलान्यास के लिए उन्होंने मुझे नेपाल का निमंत्रण दिया है। मैं उनका आभारी हूं। हम इस बात भी सहमत हुए कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। नेपाल में आई बाढ़ के संदर्भ में बात करें तो मैंने भारत की तरफ से हर संभव सहायता का प्रस्ताव फिर दोहराया है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ नियंत्रण पर कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन को और मजबूत किया जाए और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर सोचा जाए। हम दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। यह न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में होगा बल्कि क्षेत्रीय समृद्धि के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। नेपाल के लोगों को और नेपाल की सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल के विकास में अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कई ऐसे इकोनॉमिक, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर सहमत हुए हैं जो नेपाल की नेशनल प्रायोरिटी है। इसमें भारत की ग्रांट सहायता के अंतर्गत धनगढ़ी में टेक्निकल इंस्टीट्यूट एवं जीपी कोइराला नेशनल सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज की स्थापना पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। मुझे खुशी है कि आज जिन 8 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें से 4 भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भारत की तरफ से किए गए $1 बिलियन की सहायता के वायदे और आगे बढ़ाएंगे। रक्षा क्षेत्र और सुरक्षा में सहयोग हमारी पार्टनरशिप का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे सुरक्षा हित भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी खुली सीमाओं का दुरुपयोग कर रोकने के लिए दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच क्लोज कोऑपरेशन बहुत अहम है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि हमें बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए बौद्ध और रामायण टूरिज्म सर्किट का विकास करके स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के माध्यम से पीपल टू पीपल रिलेशंस को और विस्तार देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपकी इस यात्रा ने परस्पर सहयोग के हमारे प्रयासों को और गतिशीलता दी है। मुझे विश्वास है कि हमारी आज की चर्चा और जिन समझौतों पर हमने सहमति जताई है वो हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सेलेंसी, मैं आपका और आपके साथ आए शिष्टमंडल का भारत में
एक बार फिर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका भारत में ये प्रवास बहुत ही सुखद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request the Prime Minister of Nepal to deliver his statement to the media. Your Excellency, Prime Minister Modi ji, officials from both sides, distinguished media persons. First of all, I would like to extend my most sincere thanks to Prime Minister Modi ji for his kind words to me and my country, people of Nepal. We fully believe that all you have is goodwill, solidarity, desire to support Nepal and Nepali people. I am also thankful for the warm welcome and generous hospitality extended to me and my delegation. We are honored to stay at Rashtrapati Bhavan as a state guest of Government of India. I thank the Honorable President Ramnath Kovind for his graceful gesture. This is my fourth visit as Prime Minister to India. I take the opportunity as an excellent opportunity to continue high-level dialogue with Indian leaders. As Prime Minister Modi ji already spoke, our engagement remained constructive. We met in the various formats, both close and delegation level. This meeting provides excellent opportunities to take an overview of the broad spectral bilateral agendas and include political, economic, and social development matters. As you mentioned right now that about Pancheshwar that you said within this year, DPR should be completed. I am thankful to you. And if DPR Pancheshwar can be completed within a month or two, definitely we can go ahead for constructing Pancheshwar high dam so that both the country will be benefited from the flood control as well as electricity and irrigation. As you always, thank you very much for allowing me also to switch the so that electricity from Parvanipur, Raxol can be generated. And we are thankful to you that India has already given us 300 megawatts of power and additional 100 megawatts of electricity, and we will be very much benefited from our people in Nepal. Regarding Nepal-India relations, stand the solid foundation built on the one hand by the rich tradition and civilizational, cultural, socio-economic linkage. On the other hand, by two countries form commitment to the time-tested principle and sovereign equality, peaceful coexistence and respect, and recognition for each other's sensitivity and aspirations. Our relations are comprehensive. These relations have been enriched by people, noble ideas, values, and principles. Nepal is not only a neighbor, it is also a good friend of India. We share common interests on democracy, development, and dignity for each other. Prime Modi ji, as I discussed, that regular engagement at the highest political level would greatly contribute to sustain, cement trust and confidence. This visit is mine as an effort to that direction. Both of us agree that there are tremendous opportunities in Nepal-India relation, enormous potential in the economic field, particularly in water resources, trade and investment. With the end of long political transition, Nepali people stand threshold of a new era of progress and prosperity. This has come now, translate aspirations and desire into reality.
With the strong partnership and collaboration, we can make a difference and give our people to dignified life. Prime Minister Modi ji and I noted with satisfaction that bilateral projects have started again momentum in the past 1 year after regular monitoring and joint oversight of mechanism. Implementation of agreement will continue to receive enhanced focus. I think regarding, as you mentioned, that we are, while implementing the Constitution, there are some issues still pending, and we want our Constitution to be adopted and amended so that every walk of life, people in the southern part, RGB, like others, ethnic community also could participate in the election, but thank God they have agreed to participate in the election. But we try to amend the Constitution so that the Constitution is totally acceptable for all sides, but we couldn't secure 2/3 majority in the parliament. Therefore, we could not amend the Constitution. I hope in future we will have 2/3 majority and we will amend the Constitution so that people from the northern side, southern side, east, west, all people will accept the Constitution as their Constitution. And one day I'm hopeful that Constitution will be supported by all and that will encompass all the people of Nepal, Your Excellency. Last week, India celebrated its 70 years of independence. I congratulate Prime Minister Modi ji for reaching this historical milestone and for all the great achievement India has made since independence. I appreciated Prime Minister Modi ji's neighborhood first policy and approach of the Sabka Saath, Sabka Vikas. We are eager to see that these encouraging policy announcements are translated into concrete and development activities. As a friend level, we are pleased to see India's growing profile in the world affairs, both politically and economically. India's success story in growth and development is a source of inspiration. Nepal has also set a vision for development. In India's growth, we see the immense opportunity for benefit. Oh, thank you. Sorry, I have a bad throat. And with this mind, we are placing top priority on the development and upgrading of modern connectivity. Means we have been underlying the need for expanding and upgrading roads and railways, transmission lines and air connectivities. We are pleased to witness today the exchange of MOU related to construction of wider Mechi Bridge. We have likewise agreed to expedite works related to bridge over Mahakali River across border railways, integrated checkpost, road, other development project. Hydropower is a priority and hugely potential areas of cooperation between our two countries. Both government would facilitate for early start of work of two ongoing hydropower projects. DPR Pancheshwar will be finalized soon. You just witnessed the Prime Minister Modi ji and I jointly launched two newly built across border transmission line and allow us to import additional electricity for the coming dry season. These lines can be used for electricity exchanges. We are agreed to work for other cross-border transmission line. As identified, cross-border power trade will be facilitated. Prime Minister Modi ji, as I discussed about taking the measure to address inundation problem in the border areas,
we agreed to expedite utilization of the fund generously provided by the Government of India for the reconstruction project in Nepal. The 4 agreements exchanged today define the modality of the final utilization. We expressed satisfaction over the ongoing work for the eminent persons group. We are hopeful that EPG would accomplish the work within the defined time frame and submit us the practical recommendation, including the review of past treaties and outstanding issues. We also exchanged view on the strengthening regional and sub-regional cooperation within the framework of BIMSTEC, SARC, and BIPIN. And you mentioned, Your Excellency, that Nepal, a open border with your country, Your Excellency. But I would like to assure you, Nepal will never allow any activities against friendly neighbor India, and there will be every support, every help, every cooperation from our side. I would like to assure Your Excellency. Finally, dear friends, together we of 2 countries can do a lot for our better future. We can create a win-win situation in various areas of cooperation and improve the common destiny of our people. Last but not least, I wish to convey through you to the people and government of India sincere good wishes of the people of Nepal. Thank you very much. Mr. Prime Minister, thank you very much for your statement. This concludes today's proceedings.